नमस्कार दोस्तों। आज बहुत स्पेशल दिन है मेरे लिए आपके साथ ये शेयर करने के लिए कि 7 साल बाद आई एम अगेन बैक विथ अनदर होटल रूम। एक और व्लॉग आया था मेरा लास्ट 2 साल पहले जब मैंने आपको नलकॉन कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया था। और 7 साल पहले मैंने क्यों बोला, क्योंकि उस टाइम पर मैं इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा था पहली बार अपनी लाइफ में। तो आज फिर से मैं इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा हूँ फॉर द सेकेंड टाइम इन माई लाइफ, बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन यूएस। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। इट्स अ बिग, आई थिंक इट्स एन अचीवमेंट टू ट्रैवल यूएस एंड इट्स अ बिग डील। लाइक आई रियली लाइक व्हाटएवर आई एम सीइंग। सो ये जो पूरा यूएस का मेरा ट्रिप है ना, आई विल शेयर अनदर ब्लॉग विथ यू जो मैं कर रहा हूँ पर्सनली यूएस में। बट आज के दिन आई एम टेलिंग यू अबाउट एक प्रोफेशनल साइड ऑफ माई ट्रैवल कि मैं यहाँ पर क्यों ट्रैवल कर रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर जिसको पता नहीं है, आई एम हैकर एम्प्लॉय, आई एम हैकर ओनी। मैं हैकाथन पे काम करता हूँ। सो दे आर ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट कॉल्ड एम्पावर। सो इनका बेसिकली इट्स लाइक अ टाउन हॉल एनुअल इवेंट जिसपे लोग मिलते हैं, सारे एम्प्लॉयज मिलते हैं, सारी मैनेजमेंट लीडरशिप मिलती है टू डिस्कस लॉन्ग टर्म गोल्स, द अचीवमेंट सो फार, क्या विजन है, whatever you are expecting, and basically to meet everyone in the team जो हम रिमोटली काम करते हैं, so we don't meet them a lot. So मैंने काफ़ी लोगों से बात करी, बहुत लोगों से मिला मैं, and it was a great अचीवमेंट। सो आयरन ये है कि मुझे ये इंट्रो पहले रिकॉर्ड करना चाहिए था, उसके बाद इवेंट चालू होना चाहिए था, बट मैं ये इंट्रो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इवेंट खत्म होने के बाद। दिस माई लास्ट डे एट द होटल। मुझे टाइम नहीं मिला था, बट स्टिल इट्स एन इंट्रो। और ये वीडियो मैं अलग से डालूंगा फॉर हैकाथन सिक्योरिटी इवेंट, क्योंकि उसको आप देख सकोगे एज अ हेल्प अगर कोई फ्यूचर में सोच रहा है हैकाथन ज्वाइन करने का। सो दे विल नो कि हमारा कल्चर कैसा है, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट, व्हाट इज अवर जॉब, हाउ डू वी वर्क एंड हाउ वी थ्राइव। सो इट्स बेसिकली फॉर योर वैल्यू। मैं आपको दिखाऊंगा मैंने क्या किया और क्या होता है इवेंट पे, और कुछ लोगों से आपकी बातें भी करवाऊंगा, जो हमारे फेलो कलीग्स हैं और जो लोग यहाँ पे बड़े काम करते हैं हमारे हैकाथन कल्चर को प्रमोट करने के लिए। एंड आई होप यू लाइक इट। आई थिंक हैकाथन इट्स नॉट अ न्यू नेम, सब जानते ही हैं, जितने भी सिक्योरिटी रिसर्चर्स हैं, जितने भी बग बाउंटी हंटर्स हैं। सो मैंने ट्राई किया सब कुछ रिकॉर्ड करने का, वट एवर आई कैन, एंड आई होप इट्स गुड, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। सो चलिए शुरू करते हैं। They are in mediation together, and we are having a great discussion here. We are also seeing how we can collaborate much between different teams because now team MS, all three teams, freelance mediation and support team are under the same umbrella. So we are just trying to collaborate more and just trying talking things out. Yeah. So, hey Patrick, yeah, so you're working at HackerOne and you're even a hacker at HackerOne. So, what do you like the most about the platform? The platform, the most thing I like about the platform is there's so many different opportunities, very many different programs you can hack on. I like the most. That's the best part. The triage team
they're the best, and the mediation team is very helpful. So they help, they catch mistakes, and you gotta feel like you really make a difference. So when I joined, I think Donut was the most best thing that I liked about it because as a digital first thing, it was like a way to connect with people and मतलब काफी सही लगता था वो सब मेरे को and हाँ मतलब I got to learn about cultures like apart from all the job and all. What I like about HackerOne is the fantastic hacker culture we have for solving problems. So the hacker culture is so deeply ingrained in HackerOne that any problem that comes to the fore is not a big problem because we believe everything can be hacked. And by hack, we mean it can be solved not only through conventional measures and conventional means, but by thinking out of the box, coming up with innovative solutions, solving problems with the resources that we have in our control without having to invest too much into procuring new technology or new people or inventing new processes. As a hacker on HackerOne, I think that is the best platform I have ever worked on because बहुत ज़्यादा flexible है ये HackerOne platform. You know there are not so many of inputs you have to give. Like by severity, CVS is the best part because I know I can define my bug, what the severity it has और कितना impact है उसका because of the CVSs. और भाई like if I talk about workload उसमें वैसा नहीं है तो सिर्फ HackerOne is the best. मतलब मैं यहाँ पे भी फिलहाल 1-1.5 महीने हुए ज्वाइन करके यहाँ पे आने के बाद भी जो कल्चर है यहाँ का वर्क कल्चर है वो बहुत पसंद है और इसमें भी जो मैनेजर से उनके साथ जो बॉन्डिंग है तो वो बहुत ही फ्री है और मतलब रिलैक्स वर्क इन्वायरमेंट है और इसमें जो भी मतलब चीज़ें आपको जो चाहिए जैसे हम बाकी कंपनीज में देखते हैं कि आपको बहुत सारे चेक्स में पास करना पड़ता है ये इसका प्रो इसका प्रो वैसे यहाँ पे नहीं है. So HackerOne being like a dream company for me, it's a place we have like a lot of great security researchers and like a huge set of companies. So it's a pretty good place to work. You have a great set of researchers inside and the companies. So it's we have like a lot of help coming in all the days and very great learning experience. लर्निंग डेफिनेटली लर्निंग क्योंकि मतलब इधर आने के बाद मैंने Web3 सीखा, बाइनरी अभी सीख रहा हूँ. ठीक है, एंड्रॉयड जो मैं पहले करता था अब नए नए रिपोर्ट देख के मुझे पता चल गया कि ओके आई हैव टू लर्न मच मोर. तो हाँ बट लर्निंग कर जो है मतलब वो बढ़ने का चांस बहुत ज़्यादा है. आपने Web3 रिपोर्ट्स करी? हाँ Web3 रिपोर्ट्स भी करी, नए नए आइडियाज़ भी सीखे उससे, नए नए टाइप के रिपोर्ट्स भी सीखे और मेरा खुद का अप्रोच ऐसा रहा है कि मतलब जिस तरीके से रिपोर्ट आ रहे हैं मैं खुद भी सीखता जा रहा हूँ. ठीक है. So I think we have the best hackers on our platform. We have the best collaborations. We are a best team, right? Yeah. So these things are the best things I like about HackerOne, and like we have the great customers which work with us, and I think these are some of the key points. And these are the points I like the HackerOne the most.